Good morning, students. Welcome back to your grammar learning. Today I'll explain you chapter number 22, conditional clauses. It is also called conditionals or conditional sentences. It means if sentences. Mostly if is used in conditional clauses or sentences. Let's see the definition of conditional clauses. Conditional sentences are those that express an action in main clause, which is possible only if a certain condition is fulfilled. Try to understand the definition. Conditional sentences are those that express an action in main clause. It means in main clause an action is given and it is possible only if a certain condition is fulfilled. Means condition will be given in the next clause. Now there are four types of conditional clauses. They are divided into type 0, type 1, type 2 and type 3. But in modern English, two more conditionals are there, we will see, and they are called mixed conditionals 1 and 2. So let's see the main four types of conditionals. The first type is type 0. Type 0 contains general truths, scientific facts, and action most likely to occur. For example, general truths means truth always wins. Scientific facts means any scientific fact will be given. If water is heated, it boils. And action most likely to occur. This all covers type 0. See the example. When water is heated, comma, it boils. Here students, you have to keep one thing in mind, that you have to separate both the clauses with a comma. You have to put a comma after the first clause given. So here scientific fact is given. When water is heated, it boils. We all know that the boiling point of water is 100 degrees Celsius. So when it is heated, it boils. 2 and 2 make 4. The sun rises in the east is general truth. The earth revolves around the sun is general truth. Okay, so all these conditionals are of 0 type, and the format of this conditionals is simple present tense and simple present tense. Means both the clauses will be in simple present tense only in type 0. We all know that in conditionals there will be two clauses, and in type 0 conditional both the clauses will be in simple present tense only. So keep this in your mind, that type 0 means general truth, scientific facts, and action most likely to occur, and it always be in present tense, simple present tense. Then come to type 1. In type 1, which actions will be shown? It is used for fairly likely probable conditions but not guaranteed. Type 1 we use for probable conditions but not guaranteed. Probable condition, likely conditions होंगी, उसके लिए type 1 यूज़ होगा. See the example. If we leave early, we will reach on time. Probable है, most likely thing है. अगर जल्दी निकलोगे तो टाइम पर पहुंच जाओगे. So the format will be, the first clause will be in present tense and the next clause will be in future tense. अगर जल्दी निकलेंगे तो on time हम पहुंच जाएंगे. Understood? So type 0 is simple present, and type 1 is present tense, future tense. In type 1 we will write the condition which
is more likely or probable condition, but it is not guaranteed. Then come to type 2. Type 2 contains unlikely, improbable, conditional. Unlikely, improbable. See, type 0 में क्या था? General truth, scientific fact and action most likely to occur. टाइप 1 में क्या था? Likely and probable conditionals थे. Now type 2 you will have unlikely or improbable conditionals जो फैक्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय एन आइलैंड. ओके, अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो, अभी जीती नहीं है. ओके, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय एन आइलैंड. अगर लॉटरी जीत गई होती तो मैंने आइलैंड खरीद लिया होता. बट द लॉटरी इज नॉट वन. So it is unlikely, improbable, conditional. So what will be the structure of type 2? In first clause it will be past tense, and in next clause would, could, should or might will be used. Okay, let's revise type 0, 1 and 2 format. Type 0 present tense, present tense. Type 1 present tense and future tense. Type 2 past tense, would, could, should, might. Type 2 में past tense, would, could, should, might. Now type 3. I am reading. Type 3 is used for unreal imaginary situation. यानी कि जो सच नहीं है ऐसी सिचुएशन के लिए यूज़ होता है. If I had drunk coffee last night, I wouldn't have slept well. अगर मैंने कल रात को अगर कॉफ़ी ले ली होती तो मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता. पर ये हुआ ही नहीं है, रियल है ही नहीं, इमेजिनरी है. सो हियर वी विल यूज़ पास्ट परफेक्ट एंड वुड और वुडेंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म. Because here perfect tense is given, so here also we will use perfect tense. Okay, would have V3 or wouldn't have V3. Understood? So this is type 3. Type 0 is present tense, present tense. Type 1 is present tense, future tense. Type 2 is past tense or would, could, should, might. And type 3 is past perfect tense and would or wouldn't have V3. Now, as I told you, in Old English only these three types of conditionals were there, but now in modern English two more conditionals are added, and that is called mixed one conditional and mixed two conditional. Now see, this is not given in your textbook, but I am explaining you as a part of 9th and 10th syllabus also, because in 9th and 10th you will revise the grammar, you will enhance the skills in grammar. Okay, so whatever the things are there in 9th standard, 10th standard, I am explaining you in 8th standard only. So keep attention and listen to me carefully. The next type, new type of conditional is mixed one conditional. Now what is there in mixed one conditional? See, here two situations will be there in which present result of a past condition is given. For example, if I had listened to your advice, I wouldn't be in the mess. It means अगर मैंने आपकी एडवाइस सुनी होती, अगर मैंने आपकी एडवाइस मानी होती, तो आज मैं इस ट्रबल में नहीं होती. अंडरस्टूड? तो ये प्रेजेंट रिजल्ट क्या है? पास्ट कंडीशन का रिजल्ट है प्रेजेंट. पास्ट कंडीशन क्या थी कि एडवाइस को सुना नहीं, और प्रेजेंट रिजल्ट क्या है? नहीं सुना, इसलिए क्या हुआ कि मैं ट्रबल में हूँ. आई एम इन द मैस. मैं बहुत सारी सिचुएशंस में ट्रबल्स में घिरी हुई हूँ. ओके, सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मिक्स्ड वन कंडीशनल? पास्ट परफेक्ट will be given, and in next clause you have to write would or wouldn't
V1. Would, wouldn't, V1. Yeah, means present conditional. Okay, would or wouldn't, V1. Here also you have studied. It is more or like type 2 only, but a little bit change is there. So you have to keep the structure in your mind that the first clause will be past perfect tense and the second clause will be present conditional. Now mixed 2 type. Mixed 2 conditional, it will be past result of a present or continuing condition. यानी कि फर्स्ट से उल्टा है, पास्ट रिजल्ट है प्रेजेंट सिचुएशन का. इफ़ आई वर अ गुड कुक आई वुड हैव इन्वाइटेड दैम टू डिनर. अगर मैं एक अच्छी कुक होती तो मैंने उन्हें डिनर पे इनवाइट किया होता. तो पास्ट रिजल्ट क्या है कि वो अच्छी कुक है, नहीं है, और उसका रिजल्ट क्या है, प्रेजेंट कंडीशन. प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि उसने डिनर पर इनवाइट किया होता. सो सिंपल पास्ट एंड परफेक्ट कंडीशनल मीन्स वुड हैव V3. More or less it contains type 2 and 3. Okay, but you have to keep all this in your mind. Now let's come to the exercise. Exercise 1. Tick the option correctly which completes the sentence, and in some cases more than one or more, all might be correct. It depends on the situation, it depends on the speaker's situation. The first one is if it rains. If it rains, अगर बारिश होती है तो likely है ये the first test match will be cancelled. Okay, type 1 आएगा यहाँ पर. The first test match will be cancelled. Now second one, when water freezes, जब पानी जम जाता है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है. इट टर्न्स इनटू आइस. प्रेजेंट टेंस टाइप 0. ओके, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट टर्न्स इनटू आइस. थर्ड वन, इफ़ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास टाइम होगा, आई शैल गो टू द बुक फेयर, मैं बुक फेयर जाऊँगा. ओके, देन फोर्थ वन, इफ़ हरी मीट्स समीर, अगर हरी समीर से मिलता है, ही मस्ट रिमाइंड हिम टू मीट मी, उसे याद दिलवाना कि मुझसे मिले. ही मस्ट रिमाइंड, उसे याद दिलवाना होगा कि वो मुझसे मिले. फिफ्थ वन, इफ़ यू विल परफॉर्म एट माई पार्टी, अगर आप मेरी पार्टी में परफॉर्म करते हो, आई विल गिव यू अ बिग रिमेन्यूरेशन, मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा इनाम दूंगा, एक अवार्ड मतलब एक गिफ्ट के तौर पे दूंगा. सिक्स नंबर, इफ़ आई वरंट सो बिज़ी, अगर मैं इतना बिज़ी नहीं होता, आई वुड गो टू एग्जीबिशन और आई वुड हैव गॉन टू एग्जीबिशन. दोनों आ सकते हैं आंसर्स, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक से ज़्यादा चॉइस भी हैं, बट अभी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही किया है. सेवेंथ नंबर, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, आई वुड नेवर रिफ्यूज़ रोहन्स ऑफ़र, मैंने कभी भी रोहन की ऑफ़र को ठुकराया नहीं होता. 8 नंबर, इफ़ ही हैड एडमिटेड हिज मिस्टेक, अगर उसने उसकी गलती मान ली होती, वी माइट हैव फॉरगिव हिम, हमने उसे माफ़ कर दिया होता, यानी कि हुआ नहीं है, किया नहीं है. 9 नंबर, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई माइट बाय अ न्यू कार, मैंने न्यू कार खरीद ली होती. ओके, सो इम्प्रॉबेबल है. 10 नंबर, इफ़ यू वॉन्ट टू कीप फिट, ओके, यू शुड एक्सरसाइज डेली, या टेक एक्सरसाइज डेली, दोनों आ सकते हैं. ओके, या तीनों भी राइट है इसके. तो इफ़ यू वॉन्ट टू कीप फिट, you should exercise daily. Now exercise 2, here you have to write which type of conditional is used, whether it is universal truth, likely or probable, unlikely or improbable और imaginary, कौन सा है वो आपको बताना है.
इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आइस को गर्म करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा. वॉट इज़ इट? यूनिवर्सल ट्रूथ. ओके. सेकेंड वन, इफ़ आई विन अ लॉटरी आई विल बाय अ न्यू हाउस. अगर लॉटरी जीतता हूँ तो मैं एक नया घर खरीदूंगा, पर हुआ नहीं है ये. सो इट इज़ इम्प्रॉबेबल. थर्ड वन इज़ इफ़ आई वर अ घोस्ट आई विल स्कैर पीपल. अगर मैं घोस्ट होता तो मैं लोगों को डराता, तो इम्प्रॉबेबल नहीं है वो. इफ़ यू हैड आस्क्ड मी टू डू इट आई वुड हैव डन इट. ये प्रॉबेबल है, लाइकली है. इफ़ आई फाइंड एनीथिंग रॉन्ग आई शैल इन्फॉर्म यू. अगर मुझे कुछ गलत लगता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा, तो प्रॉबेबल है. ओके. सो इन दिस मैनर यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज. Exercise 3 is omitted because no meaning at all. Omitted. Okay. Exercise 4. Now if sentences can be framed in other ways using had, should, unless or were. First, some 5 sentences are given in which it is given had, unless, should, had, unless. Okay, let's see. If I had not rung him up, he would not have come to my party. So here had is used, so we will start with had. Had I not rung him up, comma, he would not have come to my party. Next one is, if he does not satisfy you with this work, we will not employ him. Now here negative is given, so unless is used. Unless he satisfies you with this work, we will not employ him. जब तक वो आपको उसके काम से सेटिस्फाई नहीं करता है, हम उसे एम्प्लॉय नहीं करेंगे. ओके. इफ़ आई मीट हिम टुमारो आई विल इन्फॉर्म हिम ऑफ योर विजिट. शुड से स्टार्ट करना है. शुड आई मीट हिम टुमारो आई विल इन्फॉर्म him of your visit. Okay. Next one is fourth one. Here also had is used. Okay. So we will start the conditional with had. Had you worked hard, you would not have been rejected today. अगर आपने वर्क किया होता तो आज आपको रिजेक्ट नहीं किया गया होता. ओके. फिफ्थ नंबर, इफ़ द पेशेंट फील्स पेन यू शुड गिव हिम दिस इंजेक्शन. अगर पेशेंट को पेन होता है तो आपको ये इंजेक्शन देना होगा. इसका मतलब क्या है? अनलेस यूज़ किया है. जब तक पेशेंट को पेन नहीं होता है आपको इंजेक्शन नहीं देना है. तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. अनलेस द पेशेंट फील्स पेन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनलेस? अनलेस मीन्स इफ़ नॉट. अनलेस इज़ द नेगेटिव फॉर्म ऑफ इफ़. ओके. सो इफ़ नॉट. Unless the patient feels pain, you should not give him this injection. Understood? If you go to the top of the building, you will see the fireworks. Should you go to the top of the building, you will see the fireworks. यानी कि हम यहाँ पर उसे एडवाइस दे रहे हैं तो हम लोग should यूज़ करेंगे. Okay, should you go to the top of the building, you will see the fireworks. If I were the monitor, I would keep the class quiet. Were is used. So we will write were I the monitor, comma, I would keep the class quiet. Okay. Next one. If poaching is not stopped, tigers will soon become extinct. पोचिंग मतलब शिकार जब तक उसे स्टॉप नहीं किया गया तब तक टाइगर्स हैं वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट मतलब उनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा, जैसे डायनासोर्स का हो गया. ओके. तो अनलेस पोचिंग इज स्टॉप्ड वी विल रिमूव. व्हाट वी विल राइट हियर? अनलेस पोचिंग इज स्टॉप्ड. नॉट को हम कैंसिल कर देंगे बिकॉज इफ़ नॉट का मीनिंग अनलेस है. ओके. सो वी आर रिमूविंग इफ़ नॉट एंड राइटिंग अनलेस. सो व्हाट विल बी द आंसर? अनलेस पोचिंग इज स्टॉप्ड tigers will soon become extinct. Okay. Then next one is ninth number.
If there is not enough food, many animals will die. If there is not enough food, many animals will die. Here also if not is given. Okay, here also if not is given, so obviously we will write unless. You have to choose the words after fifth sentence. Ninth sentence is, if there is not enough food, many animals will die. Here if not is given, so we will write unless. So what will be the answer? Unless there is enough food, many animals will die. अगर enough food नहीं हुआ तो बहुत सारे animals हैं वो मर जाएंगे. Now 10th number I am giving you the answer. It is not here. Read it and listen to me carefully. If I have the time, I shall go to the party. If I have the time, I shall go to the party. So here how you will write? What will be the answer? Should, 10 number I am writing. Should I have the time, I shall go to the party. Understood? This is the answer. Should I have the time, comma, I shall go to the party. Understood? So 10 sentences are over, and in this way exercise 4 is also completed. Now what you have to keep in mind in this chapter, that how many types of conditionals are there and what they describes and their format. Okay, quickly revise the format of all the types. Type 0 is general truth, universal truth, scientific fact. So simple present tense, simple present tense. Type 1 is likely or probable conditions. So present tense, future tense. Type 2 is unlikely, improbable conditionals. So past tense and would, could, should, might. Type 3 is for unreal imaginary situation. For example, if I had drunk coffee, ये real नहीं है, हुआ नहीं है. Okay, so what you will write here? Past perfect tense and would or wouldn't have V3. Okay, and mixed one conditional you will have past perfect and present conditional, would, wouldn't or V1. Then mixed 2 will be for past result of a present or continuing condition. So here simple past and past conditional. Okay, so in this way if you go through the format, the fourth one will be, फोर्थ वन है वो कौन सा बन जाएगा? प्रॉबेबल नहीं होगा. यहाँ पर आपको देखना है कौन सा कंडीशन है ये. अगर आप नोट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सी. इमेजिनरी है ये. ओके, प्रोबेबल नहीं है ये. राइटिंग में मिस्टेक हो गई है. यहाँ पर आपको लिखना है इमेजिनरी. इमेजिनरी. ओके, फोर्थ वन थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक हो गई है. इमेजिनरी. इफ़ यू हैड आस्क्ड मी टू डू इट आई वुड हैव डन इट. ये इमेजिनरी है, इमेजिन किया है. अगर तुमने पूछा होता तो मैंने कर दिया होता. ओके, सो फोर्थ वन इज इमेजिनरी. In this way you have to go through the notes. See, these notes are very important, so maintain the notes. It is compulsory to write all these things. Exercises you have to write in your textbook only, and
If you want to write the notes, you can write, otherwise it's not necessary to write the notes of definition and types and all these things. The important thing is the exercise. Okay, so here you can write the answers in the textbook only, so no need to write in notebook. I hope you understood conditional clauses. For this you have to revise clauses. Types of clauses: what is subordinate clause, what is coordinate clause, what is main clause. Then from chapter number 15 to 22, all the chapters are related to clauses. So this is the important thing. You will have a question of change the sentences, simple to compound, compound to complex. Okay, so you have to learn it properly. And conditionals also you will have the question in exam. So learn it well and try to understand the things from the notes which are there on your screen, and maintain the notes of English as well as grammar. Grammar you have to write the exercises in textbook, and if it is not possible to write the answer in textbook, those exercises you will write in notebook. Here in chapter 22, all the exercises will be written in textbook only, because enough space is given. Okay, so I completed conditionals, and I hope you all understood all the content. Now here I am winding up this chapter. In next lecture I'll explain you, in next video I'll explain you chapter number 23, combination of sentences, which is again a very important chapter, because so many things are covered in this chapter. So I will take it very slowly and one by one, step by step, so that you will not be confused. Okay, so okay, we will meet in next lecture. Till then, bye.